Yeah, hi guys. Today we will discuss about types of मैनुअल टेस्टिंग. पहली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. और आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग के टाइप क्या होते हैं. सो आई विल लाइक यू नो लाइक there are three types of manual testing. First one is white box testing, another one is black box testing, and third one is gray box testing. So here we will discuss about in brief. So white box testing क्या होता है कि white box testing usually done by developer. Here developer will check the code whether this is a API code or this is a user interface code. User interface is nothing but is a web page like UI testing. So here developer line by line code को check करता है. there there should not be any issue in code. Okay, so another one is that black box testing. So what is black box testing? Black box testing क्या होती है? is usually done by the tester. यहाँ टेस्टर एक एक चीज़ को मैनुअली खुद से टेस्ट करके देखता है कि whether the application is working as expected according to the client or not, and its behavior and its performance, everything checked by tester in black box testing. And there are many subtypes also for black box testing. And another one is that gray box testing. Gray box testing इसमें क्या होता है? It is a combination of white box testing as well as black box testing. So here it is also done by the tester. So यहाँ टेस्टर क्या करता है? टेस्टिंग करता है किसकी? एप्लीकेशन की. अब वो इसमें टेस्टिंग कैसे करता है? इसमें टेस्टर को कोड की भी नॉलेज होनी चाहिए एज वेल एज मैनुअल नॉलेज भी होनी चाहिए. तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन के कोड को भी चेक करेगा एज वेल एज उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्मेंस को भी चेक करेगा. तो ये होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. अब अपन डिस्कस करते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के सब टाइप क्या क्या होते हैं. सो देयर आर मैनी सब टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. So there are so first one is the functional testing, non functional testing. So functional testing में क्या होता है? functional testing में टेस्टर टेस्ट करता है कि how the application is working, whether it is working properly as expected according to the function or not according to the client. Another one is the non-functional testing. Non-functional testing means whether the application is working as expected or not. And there are many points under functional testing like exploratory testing, unit testing, system acceptance, integration, negative regression, security, smoke and stress, and web testing. So we will discuss about in deep for each point, but here I would like to tell you short. Okay, so what is exploratory testing? Here टेस्टर क्या करता है? एक एक पॉइंट को, एप्लीकेशन के एक एक फील्ड को चेक करता है, एक्सप्लोर करता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी यूज केस. वो एप्लीकेशन को गो थ्रो करता है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती. एंड यूनिट टेस्टिंग, इट इज़ आल्सो डन बाय डेवलपर बिफोर कमिटिंग द कोड इन टू द एनवायरमेंट. एंड देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यहाँ टेस्टर क्या करता है? एप्लीकेशन की को पूरा थ्रोली चेक करता है, एक्सेप्टेंस करता है. जैसे कि सपोज करो कल को ये एप्लीकेशन मार्केट में जाएगी, तो एंड यूज़र कैसे उस पर वर्क करेगा, कैसे उसको यूज़ करेगा, तो वो सारी चीज़ें टेस्टर पहले ही करके देखता है प्री टेस्टिंग में. अब आती है नेगेटिव टेस्टिंग. नेगेटिव टेस्टिंग में क्या होता है? वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑल्सो. नेगेटिव टेस्टिंग, इट इज़ लाइक दैट सपोज we need to enter our email id but we are entering our phone number, and instead of password we are giving our email id. So that kind of testing is known as negative testing. Installation testing, like whether we are able to install the application properly in our mobile phone, laptops, tabs, macbooks and all. So this is comes under installation testing. And random testing, we can understand by name random testing. It is just like negative testing. And regression testing. In regression testing, suppose regression testing, there are many use cases like suppose here we are taking the example of Amazon app. So Amazon, what's Amazon is doing basically? Yeah, it's the e-commerce app. So here there are many use cases like we can add our product into the cart, and we can add the product into our wish list, and we can add multiple addresses at a time, and we can do multiple orders at a time. So these are the use cases which comes under regression testing. Security testing, we can understand by name also. Smoke testing, what is smoke testing? This is a very critical testing.
So here what tester do? Here tester will check the critical and important feature of an application, whether it is working as expected or not. And software performance testing. What is performance testing? Performance is, suppose there is an application, and tester is the only one single user which is testing that application, and suppose after 1 hour 2 hour 1,000 user comes fall on that application, then what will happen? Suppose there are 1 lakh of user that want to register at a time, then how application will behave? So that the things we will test in performance testing. And stress testing, suppose in 1 hour there are 2 lakh 10 lakh of registration is there, so how the server and how the application will behave? So that is the stress testing. And web testing, we will check normal UI things, and whether the button is working or not, the UI look like good attractive or not, and whether the images are reflecting in good quality or not, and text is looking like good according to the client expectation. That is, सो यहाँ पे हमने इन सब टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखा है। तो हम आने वाले वीडियोस में इनमें को ब्रीफली देखेंगे, ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँगा इन सारे टॉपिक को एक एक करके। तो ये था आज का टॉपिक। सो गाइस, थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।